dear students of class 2nd. In the previous video we have studied about Shyamlal, that how he got 6 pots of gold in which 7 pots of gold in which 6 pots of gold was filled and the 7th one was half filled, and after that how he and his wife started filling that 7 pot with all the belongings, means all the things they have or all the money they have, but then also it was not completely filled. Now we will see what happened next. After that, what happened? Shyamlal's wife suggested that he should ask the king for a raise. Shyamlal approached the king with a request for a raise. The king noticed that Shyamlal was depressed and appeared worried. The king raised his salary. Despite all their efforts, the couple could not fill the 7th pot. श्यामलाल की वाइफ ने जब अब उनके सारे पैसे खत्म हो गए, अब वो लोग रात में ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे, तब श्यामलाल की वाइफ ने उसको बोला कि वो राजा के पास जाए और उनसे अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए कहे। श्यामलाल राजा के पास गया और उसने रिक्वेस्ट की कि वो उसकी सैलरी बढ़ा दे। तब राजा ने ये नोटिस किया कि श्यामलाल जो है वो डिप्रेस है और बहुत परेशान भी लग रहा है। राजा ने उसकी सैलरी बढ़ा दी। ये सब के बावजूद, डिस्पाइट ऑल देयर एफर्ट्स, उनके ये सारी एफर्ट्स यानी मेहनत के बावजूद भी वो कपल यानी श्यामलाल और उसकी वाइफ उस 7th पॉट को फिल ना कर सके यानी भर ना सके। Shyamlal decided to ask the king for another raise. The king thought for a moment. It was unlike Shyamlal to be so depressed. Besides, he was being paid handsomely. Then the king asked, "Have you been given 7 pots of gold by the forest spirit?" Shyamlal stared at him and nodded his head. The king then said, "The forest spirit once gave me 6.5 pots of gold. I could have easily used the 6 pots. Instead, I spent all my time filling up the 7th pot. Return the pots to the forest. You will regain your peace of mind." Shyamlal heeded the king's advice. He threw the pots away and lived happily. श्यामलाल ने फिर डिसाइड किया कि वो राजा से जाकर अपनी सैलरी और बढ़ाएगा। राजा ने थोड़े टाइम कुछ सोचा, फिर उसने सोचा कि श्यामलाल क्यों आखिर डिप्रेस है। बिसाइड ही वॉज बीइंग पेड हैंडसमली, क्योंकि उसे तो अच्छी पगार यानी अच्छी सैलरी मिलती थी। तब राजा ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें भी फॉरेस्ट स्पिरिट ने 7 पॉट्स ऑफ गोल्ड दिए हैं यानी मटके दिए हैं 7 सोने के। श्यामलाल उसको देखा और उसने हाँ में सर हिलाया। द किंग देन सेड, तब राजा ने उससे कहा, द फॉरेस्ट स्पिरिट, कि उस फॉरेस्ट स्पिरिट ने, स्पिरिट यहाँ पर आप भूत कह सकते हैं, कि उस जंगल के भूत ने उसे भी 6 पॉट्स और एक आधा पॉट दिया था गोल्ड का। आई कुड हैव इजली यूज द 6 पॉट्स। उसने कहा कि मैं उस 6 पॉट्स को इजली यूज कर सकता था, लेकिन मैंने अपना सारा टाइम उस 7th पॉट को भरने में लगा दिया, तो उससे बेटर है कि रिटर्न द पॉट्स टू द फॉरेस्ट। तुम उस पॉट्स को जाकर जंगल में रिटर्न कराओ, उसके बाद तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा, तुम्हारा दिमाग तब जाकर शांत होगा। श्यामलाल हीडेड द किंग्स एडवाइस। श्यामलाल ने राजा की बात मानी और उसने वो सारे पॉट्स ले जाकर फेंक दिए और उसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगा। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट आंसर। A. Take the correct answer. Number 1. Shyamlal
Shyamlal began to drop all his earnings into the Shyamlal began to drop all his earnings into the pot, box, well. Option A, pot. 3. Shyamlal decided to ask the king for another. Option A, punishment. Option B, raise. Option C, reward. Option B, raise. Number 4. Shyamlal threw the pots away and lived. A, happily. B, sadly. C, rudely. A, happily. Now write who said the following statements. किसने ये स्टेटमेंट्स, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि ये किसने कहा और किससे कहा. नंबर 1, आई वॉन्टेड टू थैंक यू फॉर द काइंडनेस, said by forest spirit. FOREST, forest spirit, or you can write here ghost also, forest ghost, forest spirit. and said to किससे कहा गया? श्यामलाल से कहा. श्यामलाल, SHYAMLAL, श्यामलाल. He should ask the king for a raise. Who said this line? He should ask the king for a raise. Shyamlal's wife. Shyamlal's, said by Shyamlal's, Shyamlal's wife, WIFE, wife to श्यामलाल. श्यामलाल की वाइफ ने श्यामलाल से कहा. Then number 3, have you been given 7 pots of gold by the forest spirit? Have you been given, क्या तुम्हें भी forest spirit से 7 pots of gold मिले हैं? King, said by king, said to श्यामलाल, राजा ने श्यामलाल से कहा, पूछा. Number 4, the forest spirit once gave me 6.5 pots of gold. Again, king said to Shyamlal, said by king and said to Shyamlal. Now, tick true or false. Shyamlal was not the royal barber. False. Shyamlal stared at the king and nodded his head. True. The spirit only wanted to thank Shyamlal for the kindness he showed to trees. True. Shyamlal put the pots with him and lived happily. False. Answer the following questions orally. Exercise D. Who was Shyamlal? Shyamlal was, or you can write here, royal barber. ROYAL, royal barber. What did Shyamlal hear in the forest? Voice of forest spirit. What did Shyamlal find in the home? Shyamlal found 7 pots of gold. 7 pots of gold. Who advised Shyamlal? King. Answer the following questions in writing. This you have to do in your copy, which I will tell you afterwards. Exercise F. Find words from the box which mean. Number 1, one who cuts the hair. Here, barber. Write down here number 1 and here write down barber. BARBER, barber. Approached. Number 2,
one, to, came to, approached, C-A-M-E, came, T-O, to be confident, number 3, to be confident, here, assured, A-S-S-U-R-E-D, assured. Number 4, feared, here, scared, S-C-A-R-E-D, scared. Number 5, to bend the head slightly, this one, nodded, N-O-D-D-E-D, nodded. Now rearrange the letters to make meaningful words. Exercise G, exercise H, and exercise I. J and K. These exercises are very easy. If you will try at your home, you can do this. So this exercises I